Hey everyone, welcome back to my channel. My name is Ankit and I am a data analyst. I assume some of you are planning to pursue their career either in a data science or as a software engineer. So this course will help you to build a solid foundation, चाहे आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट हो या एआई में काम करना हो या फिर किसी और डोमेन में। तो चलिए देखते हैं सीबीएसई नेट में इस बार के सिलेबस को कैसे डिजाइन किया है और इस कोर्स से आपको क्या फायदा होगा। लेट्स स्टार्ट बाय डिस्कसिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स। आप ये कोर्स क्यों पढ़ रहे हैं और इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा। इस कोर्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देना जो आपको आगे चल के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस की फील्ड में हेल्प करे। क्लास 11th में आप अपने कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बेसिक्स पढ़े थे और अब क्लास 12th में आप एडवांस पाइथन फंक्शंस और फाइल हैंडलिंग के बारे में सीखेंगे and some more data structure you will learn about here. Then you will also learn concepts about computer networks and database management. So advanced Python programming, computer network and database management. All these you are going to learn here. तो क्लास 12 का ये कोर्स आपको इन डेप्थ नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड करेगा जो आपको आगे की करियर में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. So it is distributed as 70 marks of your theory and 30 marks of your lab, program, file and project. First look at the theory. So again, the most important is Python programming and computation thinking. इस पार्ट के लिए आपको 40 मार्क्स मिलेंगे दिस इज ऑल्सो कवर बट दिस इज ऑल्सो कवर द बेसिक फ्रॉम क्लास 11th. तो अगर आपके क्लास 11th के कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं तो आपको इस पोर्शन में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे और आपको यहाँ पे उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी बिकॉज क्लास 11th का आपका बेसिक्स का बेस बहुत क्लियर है जैसे कि हमने वहाँ पहले भी डिस्कस किया था. Although we are also going to do this quick revision of class 11th, but you can also refer to the class 11th video if you want. Now the next topic is computer network. Computer network का थोड़ा lighter weightage होगा 10 marks का, but it is also important. Then comes the data management. Here you will learn about SQL and how to write SQL queries. Now here comes next the practical. प्रैक्टिकल एग्जाम 30 मार्क्स के होंगे. इसमें आपको पाइथन प्रोग्राम सीखने होंगे, SQL क्वेरीज एग्जीक्यूट करनी होंगी और एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा जो आपके कोर्स के कॉन्सेप्ट को कवर करेगा. अब हम सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग और कंप्यूटेशनल थिंकिंग. To start with this, the class 11 concepts are prerequisite. You need to revise Python basics, and along with that, you will also learn about functions and exception handling. Then come file handling, where you will learn about different ways to read the file, like how to handle text file or binary file or CSV file. CSV file are nothing but these are like also called as comma separate value files. These are the tabular data or you will majorly find in CSV or the Excel files. Then you will learn about some new data structures like stacks and queues and their implementation. Data structure are very important if you are planning a career in computer science. They are extensively used in software development and also being asked in every interview. uh, the data science and algorithm, and you are going to use you're going to need the knowledge regarding the data structure at every step if you are planning a career in the computer science. And here comes the next part: computer networks. It is very important to have the basic understanding of computer network. So in this unit you will learn कि कैसे network evolve हुआ, how does it help in transmission of data and media. Like there are billions of users on Instagram and YouTube and every on social media and everything, and they have these social media sites and also have millions of content like videos and everything, and you can use them. You can access your ID. You can watch these videos and everything using the network. Next, you will learn about network topologies, like how client-server architecture works. Now, the final and also very important part as per the data, like how to handle the data. Like if you need to create a Python program which needs some data, so that data you can access by writing SQL queries, or SQL queries, which in turn communicate through the database to return you the required data. You will learn here about how to manage database, what are the relational databases, and how to write the SQL queries. This is nothing but as आपको मतलब like जैसे कि आप किसी से बात करते हो, किसी से बात करने तो वी यूज अ लैंग्वेज लाइक सामने वाले पर्सन को अगर हिंदी समझ में आती है तो हम हिंदी में बात करते हैं ताकि
हम कम्युनिकेट कर सकें। तो इंग्लिश समझ में आती है तो हम इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। सेम इफ वी नीड टू कम्युनिकेट टू द डेटाबेस, we need to talk in the terms of SQL language. Okay, so the database understands SQL language. In it, there are some other parts like data definition and data manipulation language. You will learn about them in this unit. So these are the topics you will learn about in this course. Next are the suggestion and tips. Revision of 11th Python concepts is very important because without that base you will struggle very much here. अगर आपके Python के basics concept clear नहीं है, फोकस ऑन योर बेसिक्स। क्लास 11 के बेसिक्स को रिवाइज करना ना भूलें, क्योंकि क्लास 12 में उन्हीं बेसिक्स को एडवांस लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फंक्शंस, एरर हैंडलिंग और डेटा स्ट्रक्चर पे स्पेशल फोकस करें। देन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस SQL क्वेरीज को रेगुलरली प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये आपके डेटाबेस मैनेजमेंट स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। एंड वेरी मच कंसिस्टेंसी इज द की। प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटेशन थिंकिंग में रेगुलर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपका कमांड नहीं आएगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और लॉजिक जो अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होती है वो प्रैक्टिस से ही आप डेवलप कर पाओगे। वीक में कम से कम आप 1 या 2 घंटे भी इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे या उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड नेवर हेजिटेट टू आस्क द क्वेश्चन। आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो अपने टीचर से या किसी और स्टूडेंट से, जो भी आपका फ्रेंड हो, जो तो उससे आप पूछ सकते हैं, या यू आर वेरी मच वेलकम टू कमेंट हियर, आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। So for class 12, we will also be coming up with the new videos covering all the units in the details. But if you need me to create a separate video about some topics, please comment down. And if you find this video helpful, then please like. You can also share this video with your friends. And if you are new here, then please subscribe and also press that bell icon, so that whenever I post next video explaining any topic, you will don't miss out. So this concludes today's session. We will meet in the next session. Till then, keep learning and keep growing. Bye.